Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So students, firstly you tell me what we have learned in previous class. So student, we have learned in a previous class describing a thing. We have learned about this how to describe a thing in a previous class. So students, look at this is your block 7 and this is the part 4 of your block and this is the last part of this block. Okay students, now student, tell me what are some words we can use to describe the shape, size or color of a thing. Now let's discuss. Some words to describe the shape, size and color are round. शेप कैसे होती है? राउंड, स्क्वायर, ओवल, ट्रायंगुलर. तो ये दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अबाउट द शेप. और साइज कैसा है? बिग, स्मॉल, शॉर्ट. कलर रेड, ग्रीन, येलो एंड orange. So these are the describing words that describe a thing. So students, now look at this. Describe your dress. ड्रेस को डिस्क्राइब करना है आपको. सो माई फेवरेट ड्रेस इज़ रेड फ्रॉक. द फ्रॉक इज़ लॉन्ग, इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स. सो स्टूडेंट, दिस इज I will describe my dress. My favorite dress is red frock. The frock is long, it has black stripes. So student, look at this. There are two questions. Is there any problem with these sentences? And what are the problem? Have you any problem in these sentences and what are the problems? So all the sentences have error related to use of capital letter and full stop. ये जो sentences है इनके अंदर error है. और which errors? इनके अंदर फुल स्टॉप नहीं है. दे आर नोट बिगिन विद द कैपिटल लेटर. सो नाउ वी विल करेक्ट इट. यहाँ पे माई है तो माई क्या हो जाएगा? अपर केस हो जाएगा. एम फेवरेट ड्रेस इज़ रेड. रेड को हम लिख देंगे रेड. फ्रॉक के बाद क्या लगेगा हमारा? कोमा नहीं लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे हम. तो फुल स्टॉप के बाद जो आएगा वो कैपिटल हो जाएगा. यहाँ पे द हो जाएगा. द फ्रॉक का लेटर लोअर केस हो जाएगा. इज़ लॉन्ग, फुल स्टॉप लग जाएगा. इट हैज़ को लोअर केस करेंगे. ब्लैक को लोअर केस करेंगे. स्ट्राइप्स. सो दीज आर द सेंटेंस. माई फेवरेट ड्रेस इज रेड फ्रॉक. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड वन इज the frock is long. This is the second. And third one is it has black stripes. Now these are the correct sentences. Full stop लग जाएगा लास्ट में. So these are the correct sentences. So student, I hope it is clear to you. Move on next. Tell me what are important points to keep in mind while writing sentences. What are the important points keep in mind while writing sentence? Second one is why it is important to include describing words in sentences. Why it is important to include describing words in sentences. Now let's discuss. So students, all the sentences must begin with the capital letter and end with the full stop. सभी सेंटेंस कैपिटल के साथ स्टार्ट होने चाहिए और एंड विद फुल स्टॉप. एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नेवर रिटन विद द कैपिटल लेटर्स. और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कैपिटल लेटर में नहीं राइट करना है. ओके, ओनली प्रॉपर नेमिंग वर्ड शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. जो प्रॉपर नेमिंग वर्ड है, सपोज आपने बोला कि
प्रॉपर जो होगा किसी का नेम है, वो प्रॉपर नेमिंग वर्ड है, उसको हम कैपिटल लेटर में राइट करेंगे. ओके. ऑल अदर नेमिंग वर्ड्स स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. और जो भी अदर नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर में राइट करेंगे. जैसे हैट है तो उसको हैट को स्मॉल लेटर में ही राइट करेंगे हम. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ नेमिंग वर्ड इन ईच सेंटेंस एज दिस इज़ व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. नेमिंग वर्ड से पता चलता है ना कि सेंटेंस किसके बारे में है ना. सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट. Describing words is important because it tells us more about the naming word. ये हमें नेमिंग वर्ड के बारे में ज़्यादा बताता है. जैसे राम, फॉर देर इज़ एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय. यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है गुड, और किसके बारे में बता रहा है, राम. तो राम कैसा है, गुड है, गुड बॉय है ना. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस more about the naming word. So student, I hope it is clear to you. Move on next. Now look at this question. Tell me, this is your horse question, higher order thinking skill. What other kinds of words does a sentence have? What other kinds of sentence does it have? Now let's discuss the answer of this question. Yes, a sentence also has doing words. Sentence में क्या होता है, doing words. It means verbs. Run, play, jump, these kind of verbs. All the sentences must have a doing word or a word like is, am, are. Okay, तो connect करते हैं ना ये naming word को describing word के साथ. These words is, am and are. So student, this is your topic. This is your lesson 4. So students, thank you for watching this video and watch it carefully.